Hello everyone, this is Dipti. Welcome in Rudra Education. Today in this video we will see top 10 general knowledge questions 2021 which is most asking and very important for your all competitive exams. And I'm sure this video will be very useful for you. So guys, please watch till end and please like, comment, share and subscribe my channel. एंड अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दी है, सो यू कैन सी फ्रॉम देयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. Okay, so today's first question is Japanese player Naomi Osaka plays which sports? So options are option A badminton, option B tennis, option C archery, option D weightlifting. So let's see. Okay, so over here our answer is option B tennis because Naomi Osaka एक tennis player है and she has been ranked number 1 by the Women Tennis Association. So our correct answer is option B tennis. Okay, now next question is when is the World Environment Day observed? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 4 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 5 जुलाई एंड ऑप्शन डी 5 अप्रैल. सो लेट्स सी व्हाट विल बी आवर आंसर. ओके, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 5 जून. ऑन 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व्ड किया जाता है. So our answer is option B 5 June. Okay, next question is when was the Indian Evidence Act enforced? So options are option A 30th of September 1872, option B 1st of January 1872, option C 31st December 1871 and option D 1st September 1872. Okay, so correct answer is option D 1st of September 1872. So on 1st of September in 1872 में ये इन्फोर्स्ड में आया था द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सर जेम्स स्टैफिन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड द इंडियन एक्ट क्या है ये? इट इज अ सेट ऑफ द लॉ applicable to all Indians and this law is mainly based upon the firm work. So Sir James Stephen is the father of this comprehensive piece of legislation. So our correct answer is option D 1st of September 1872. Okay, next question is red tourism which was seen in the news is associated with which country? सो रेड टूरिज्म किस कंट्री के साथ एसोसिएट करता है? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी श्रीलंका. ओके, सो लेट्स सी. ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी चाइना. यू शुड ऑल्सो नो व्हाट इज रेड टूरिज्म. सो रेड टूरिज्म एक प्रोजेक्ट है जो कि 2004 में लॉन्च हुआ था एंड इट इज रेफर्स टू द विजिटिंग साइट्स विच हैव अ मॉडर्न रिवोल्यूशनरी लेगेसी. And red tourism seeks to spread awareness about the history of the communist parties of China. Means China की कम्युनिस्ट पार्टीज के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में अवेयर करवाने के लिए ये प्रोजेक्ट को बनाया गया था 2004 में. एंड सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी चाइना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when is Telangana Day celebrated or observed? So our options are option A 1st of June, option B 2nd of June, option C 2nd of July and option D 15th of August. Okay, so let's see what is our answer. Okay, the central government under the United Progressive Alliances decided to bifurcate the existing Andhra Pradesh state and on 7th of February 2014 मीन्स बहुत सालों के प्रोटेस्ट एंड एजिटेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश को
बाइफर्केट करने का डिसीजन लिया था, मीन्स सेपरेट करने का डिसीजन लिया था ऑन 7 February। देन तेलंगाना को एज अ स्टेट डिक्लेयर किया गया ऑन 2 June 2014। सो आंसर इज ऑप्शन बी 2 June। एंड ऑन 2 June 2014 को तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है और ऑब्जर्व्ड किया जाता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशंस लार्जेस्ट नेवल शिप द खड़ग sank after catching fire on 2 June 2021? Okay, options are option A France, option B Italy, option C Iran, and option D Iraq. So over here our answer is option C Iran, because Iran's largest navy ships, which is known as a Kharg, sank after catching fire in the Gulf of Oman on 2 June 2021. And according to Iranian media, the fire broke out at around 2:25 AM during a training mission when the ship was near the port of Jas, which is major shipping lane. No casualties were reported as the entire crew of the ship was able to escape the break-in time. So option C is the correct answer of this question. Okay, next question is which country is hosting the World's Environment Day this year? 2021 में कौन सी कंट्री वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को होस्ट कर रही है? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी मालदीव्स। आंसर इज ऑप्शन सी पाकिस्तान। पाकिस्तान इज द ग्लोबल होस्ट फॉर द डे टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन दिस ईयर। इन 2021 पाकिस्तान इज अ होस्टिंग कंट्री जो कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 को होस्ट कर रही है with the theme ecosystem restoration, and the main aim of this theme is to reverse the degradation of ecosystem and diversity of life. So answer is option C, Pakistan. But you should also know that why do we celebrate Environment Day on 5th June? So World Environment Day is celebrated on 5th June every year to remind people about the importance of nature. So answer is option C, Pakistan. Okay, next question is world's first human case of H1N3 bird flu has been reported in which nation? Options are option A China, option B Singapore, option C Japan, and option D Malaysia. Okay, so answer is option A China. In the world's first case, China reports human getting infected with H1N3 bird flu in the China's eastern Jiangsu province. So China's eastern Jiangsu province में फर्स्ट बर्ड फ्लू केस को रिपोर्ट किया गया था. सो आंसर इज ऑप्शन ए चाइना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरी कॉम won which medal at the 2021 ASBC Asian Boxing Championship? So options are option A gold, option B silver, option C bronze, and option D none of the above. Okay, so option B is the correct answer of this question. Mary Kom won silver medal at the 2021 ASBC Asian Boxing Championship. So option B is the correct answer. Okay, next and last question is NASA has announced plans to launch 2 new missions to each planet between 2028 and 2030. So options are option A Jupiter, option B Saturn, option C Venus, and option D Mercury. So let's see the answer. Okay, so correct answer is option C Venus. National Aeronautics and Space Administration means NASA has announced that it is sending 2 new missions to Venus in order to examine planet's atmosphere and geological features. So Venus के atmosphere and geological features को examine करने के लिए NASA 2 new missions को send कर रहा है to the Venus.
and the mission which have each been awarded with $500 million in funding are due to launch between 2028 and 2030. So correct answer is option C. Okay guys, this was last question of this video and I hope आपको all questions अच्छे से समझ में आए होंगे. एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो गाइज प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.